Hello students, so we will continue our discussion on statistics chapter, and in this video we will cover the median section. Earlier we have discussed about the mean of the statistics data, all those things. Now what is the median? Median basically is the mid value of a group of data or the discrete data. If you collect the discrete data, then the mid value will represent the median. So what do we mean by mid value? Mid value means if you arrange or if you just put the random data and if you just analyze those data and we find out that there will be a value which will be equidistant from the higher magnitude of the data or the lower magnitude of the data. So that value will be the mid value. So that is the basically mean of the median. So all these mean, median, mode, all are centrally specific values. Okay? They provide us knowledge about the central tendency of the this group of discrete data or group of some data. So whether it is discrete or continuous, all those data are covered in those sections, and we have discussed regarding discrete and as well as the group values or the group data, or we can say that there is the series in which their data are in continuation. All those things covered in this statistics chapter. So median basically means central tendency of the group of data. Group of data means there will be some, like we can say the numbers. The numbers are from 1 to 100. So if I pick some 10 numbers randomly, like 10, 20, 25, 37, 48, 95, s in this way, then the mid value, there will be a value which will represent that its value is equidistant from the higher magnitude. That means like 95 is the largest number, then this is called the magnitude of a number. So this magnitude is equidistant from this value is equidistant from the higher magnitude to the lower magnitude. Suppose there is a student who got only 2 marks. So we can say that there are 45 marks. So the 45 is equidistant from 2 as well as we can say let's say 93 or 88. So it is equidistant. In that way we will say that median is the central tendency. ये सेंटर की टेंडेंसी है उसको बताता है. ठीक है, चलिए. नाउ देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड आउट द मीडियन, like median of individual observation. Individual observation means I just give you some random values like x1, x2, x3, x4 up to xn. These are the random values, are n values of a variable x. Let's say we can call it as the marks, like some student got 15 marks, some student got 10 marks, in that way. Okay? So the ascending and descending order of magnitude. So this is the basically I wrote the procedure how to find out the median. So this is the algorithm in which the first step will be to arrange all these data in ascending or a descending order. That will be our first priority. Second will be the find out n. To find out the n. What is n? How many data are there? That will be over n. Third thing, if n is odd, then median will be n plus 1 by 2 the observation. And if n is even, then median will be arithmetic mean. Arithmetic mean means the average of two data. Average of n by 2th term and n by 2 plus 1th terms. कि जो डाटा है उनका एवरेज लेना है, that will be our median. So there is the example. Find the median of the daily wage of 10 workers. So how many workers are there? 10 workers. So for this question, the n will be 10. So if let me answer it here. So answer to first question. We have find out that n equals to 10 because it is
given that this is the daily wage of 10 workers. Okay? So therefore the n value will be 10. Now the first step is ascending and descending order. So it's up to you whether you want to arrange them ascending order or descending order. Okay? It's up to you. It is not mandatory that you must arrange them ascending or you must arrange them descending. It's up to you. So let's say, let me arrange all those data from lower value to higher values. Okay? That is called ascending. So 8, there will be 8, the next value will be 9, then next value will be 11, then is there 12, 13, 14, 15, 15 is there, 16, not there, 17 is there, 18 is there, 19, 19 is not there, 20, 22 and 25. So just count whether there are 8 numbers or not. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 4, 10 numbers are there. So that means we have arranged all those data, all the daily workers of 10, all the daily wage of 10 workers in ascending order. Now we have completed the first thing, we have completed the second thing as well, as n equals to 10. Now let's move to third thing. Just check out whether n is even or odd. So in this case n is 10 and 10 is an even number. It is an even number. So we will take this condition. If n is even, then median will be arithmetic mean of n by 2th term plus n by 2 plus 1th term. So in this case n is 10. So n by 2th term क्या होगा? What will be the n by 2th term? So n just value 10. 10 by 2. Which is equals to 5th observation, and 5th observation is equals to, the 5th observation will be 15, so it is 15. Now n by 2 plus 1th observation, ये आपका कितना रहेगा? 6th observation. As n by 2 is 5, so 5 plus 1, 6th observation. And the value of 6th observation is 17. So 17. So you have find out the values of n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation. Now if you want to find out the median, then median will be average of these two values. So median is equals to average of 15 plus average of 17 by 2. Arithmetic mean, if there are two data, we will divide it by 2. So 1 by 2 n plus 1th observation plus n by 2 plus 1th observation will be your median. So median is equals to 15 plus 17 and this becomes 32. So 32 by 2 equals to 16. So 16 will be your answer. This is the way to find out the median. So in this particular question we find out that n equals to even, therefore we go for this condition. If the value of n odd, then we will go for this condition. The median will be n plus 1 by 2th term. Like if the n equals to 11, then we will find out that the median will be 11 plus 1, 12, 12 by 2, 6th observation will be the median. In this way, we find out the median when it is given that the data are individual observations. So this is the procedure. I think you have already studied this type of procedure, this type of conditions or this type of methods in your 9th class. Now move to question number 2. For that I have mentioned another method, that is for the discrete frequency distribution. In this question you can observe that a particular data occurs only one time. So what if the one particular number occurs many times, like 5 times or 7 times or 10 times? So in that case what will you do? So for that you have to find out the cumulative frequency. So there is a new word, the cumulative frequency. So what do we mean by cumulative frequency?
Cumulative means collect, to collect है ना, collect करना कि observations है उनको collect करना आपका, that is your cumulative frequency. So cumulative frequency means we have to collect all the frequencies together. Like let's say this rupees 20, let's say 20 occurs 5 times, so and 25 occurs 4 times, 17 occurs 3 times. So what we will do, we will add 5 plus 4 plus 3. So 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. So it will become 12. Similarly 18 or 17 will occur sometimes. So in this way we have to add all those frequencies. How many times a particular number occurs, we have to add all those numbers. That will be our cumulative frequency. That will be your first thing. Second thing is to find out the value of n by 2, where n will be the summation of fi. So summation of fi is nothing but the final result of cumulative frequency. So we will discuss how to add all those things. So for that, let me erase the first portion so that I can explain you. So for this question, like just I mentioned one question here as well. The value of variables are given from 1 to 9. So just make a table. Let's say x. ये आपका एक टेबल रहेगा from 1 to 9. The next thing will be frequency. So this is your frequency, and the frequencies are given 8, 10, 11, 16, 20, 25, 15, 9 and 6. So this is the information we are provided in this question. Now what we will do? The next column will be for the cumulative frequency. CF is nothing but the cumulative frequency. This is the abbreviation for cumulative frequency. CF is the abbreviated form. CF, cumulative frequency. So in this section what we will do? We will add all those frequencies. 8 is the first frequency, so we have to add in nothing in this. Now add these two things for the second place. So you will get 10, 8 plus 10, you will get 18. Similarly, you will add all these three. So it will become 8 plus 10, 18 plus 11. 18 plus 11, that will become 29. So this will be 29. Now, यहाँ पे क्या देखा आपको कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करने हैं. पहले के लिए कुछ भी ऐड नहीं करना, दूसरे के लिए दोनों को ऐड करना है, तीसरे के लिए तीनों को, चौथे के लिए चारों को, पांचवे के लिए पांचों को. ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है. सो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा. इस तरीके से ऐड करना है. ऐसा नहीं है कि इन दो को ऐड कर दिया तो फिर आगे छोड़ देंगे, नहीं. आगे पता लगा आप 11 को यहाँ पे 11 रखो. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. आपको क्या करना है, ऐड करते रहना पीछे वाले नंबर को कंटिन्यूअस. या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहते, जैसे 8 प्लस 10 18 आ गया. नाउ इनको ऐड करो, 18 से नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करो. ठीक है, सो 18 प्लस 11 विल बिकम 29. नाउ 29 प्लस 16 इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट. 29 प्लस 16 विल बिकम 45. ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है सारे नंबर्स को. सिमिलरली आप इनको ऐड कर दो. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां वाला आप चाहो तो इन चारों को ऐड कर सकते हो, 8 ये एंड ये. ठीक है, वैल्यू सेम आएगा, वही 45 आएगा. ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस प्रोसीजर से जाना चाहो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐड करना है. तो अभी मैं लिख देता हूं. ये आपका बन गया 20 प्लस 45 विल बिकम 65. 65 प्लस 25 विल बिकम 90. 90 plus 15 will become 105. 105 plus 9 will become 114.
114 plus 6 will become 120. So your summation of f, ये आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे summation of fi, ये आपका कितना आएगा 120 आएगा। यहाँ पे जो समेशन आएगा और ये जो वैल्यू है ये दोनों हमेशा सेम आती है। क्यों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस टू ऐड all the frequencies. That is basically the meaning of a cumulative frequency. So ultimately आपको जो end result आएगा that will be the add of all these frequencies. So 120. अब आपको क्या करना रहेगा? You have to find out the value of n by 2. So what will be the n by 2? N by 2, that will be 120 by 2, you will get 60. So the value of n by 2 is equal to 60. Now the next thing is, see the cumulative frequency CF just greater than n by 2. यहाँ पे n by 2 का वैल्यू कितना है? 60. आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है? जिसकी वैल्यू n by 2 से जस्ट लार्ज हो। ठीक है, तो चेक करते हैं। 8, 18 are smaller than 60, 29 smaller than 45, smaller than 65 is the larger. ठीक है, so 65 will be the value. What value? See the cumulative frequency just greater than n by 2. So वो कौन सा cumulative frequency है? 65 is that cumulative frequency. Now move to next thing. Determine the corresponding value of the variable. Now we have to look at the value of the variable. What is the value of variable? 65 के corresponding आपको variable की value मिल रही है 5. So that will be the value of a variable. So the value of x will be 5. ठीक है, now move to next thing. The value obtained in step 3 is the median. So your median is 5. That is the way to find out the median. So your median is 5. Median will be 5. This is the way to find out the median when the frequency of the discrete data are given. So what will you do? First you have to arrange them like this. You have to make a table. In the table the first column will be related to variable, second column will be related to the frequency, third column will be related to the cumulative frequency. So cumulative frequency कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपन ऐड करते रहते हैं। ठीक है, पहला है पहले पास ही रखो, दूसरा जब आएगा यहाँ पे जो आएगा टर्म वो क्या होगा? इन दो का ऐड होके आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? इन तीन का ऐड होके आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो चार का ऐड होके आएगा। ऐसे आपके नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनको ऐड करने का क्या तरीका है? एक तो ऐसे तरीका हो गया, सबको ऐड करते रहो, या फिर क्या करो, पहला ऐसे आ गया, सेकंड वाला कैसे आएगा? वो आएगा ऐसे, 8 और 10 को ऐड कर दो। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? 18 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 18, 11 नेक्स्ट नंबर को ऐड कर दो, 29, ये 45, ऐसे ऐड करते रहना, 20, 120 मिल जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by 2. So in this case n by 2 is equal to 60. Now you have to look at the cumulative frequency column and try to find out the value of cumulative frequency that is just greater than n by 2. So value of n by 2 is 60. So we have to find the cumulative frequency which is greater than 60, just greater than 60. So till now we have got that 45 is less than 60. So 65 will be greater than 60. So 65 is our desired cumulative frequency. Now corresponding to this cumulative frequency 65, you have to find out the variable. Which variable has the cumulative frequency 65? So you find out that the variable will be 5. That variable will be your median. This is the way to find out the median when it comes to discrete frequency distribution. Okay, so I think you have discussed this method as well in your 9th class. So now move to the next portion, that is this I think this portion belongs to your 10th class. Now the median of a group or continued frequency distribution. What do you mean by continued? Like there will be a series like 5 to 10 or 20 to 50 हो गया, 50 to 80 हो गया. In this way there will be a series.
So that is known as the continued frequency distribution. ठीक है ना? So अगेन जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है आपको कैसे फाइंड आउट करोगे? ग्रुप या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। अभी तक अपना जो भी डिस्कशन था दैट इज रिलेटेड टू द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको क्या करना रहेगा, जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से ही ट्राई करते हैं, ठीक है? आज ये क्वेश्चन बनाएंगे, आने वाली वीडियो में और क्वेश्चन अच्छे बनाएंगे। मीडियन आपका ये रहा, एक क्लास रहेगी, एक फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो आपको कॉलम कैसे बनाना है, इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है कि क्लास यहां पे मेंशन कर देंगे आपको, क्लास 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. So this will be your first column. Now second column will be related to frequency. So frequency, तो frequency के रिगार्डिंग क्या क्या आएगा? 5, 6, 15, 10 and 5. Okay. Now move to the algorithm portion. एल्गोरिथम पहला टर्म क्या बोलता है? फाइंड आउट करना आपको क्या? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी अपने बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले के लिए ऐसे ही रखो, सेकंड के लिए क्या होगा? इन दोनों नंबर का ऐड होगा, ठीक है? क्या करोगे आप? इन दोनों को ऐड करोगे, यहां पे जो आएगा फिर उसको इसके साथ ऐड करोगे, यहां पे फिर जो आएगा उसको इसके साथ ऐड करोगे, ऐसे ही आपका चलता रहेगा, ठीक है? दिस इज द वे टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 5 plus 6 will be 11, 11 plus 15 will be 26, 26 plus 10 will be 36, 36 plus 5 will be 41। तो यहां पे जो लास्ट में नंबर आ रहा है 41, दैट इज योर समेशन ऑफ fi। यही आपका समेशन ऑफ fi होता है। ऐड करके देख लो, 5 6 11 15 26, 36 प्लस 5 है 41, ये आपका आ गया। फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डन। सेकंड पोर्शन, फाइंड n by 2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n by 2? n by 2 value will be 41 by 2, that is 20.5. So value of n by 2 is 20.5. So second step is done. Third step, see the cumulative frequency just greater than n by 2. n by 2 से just larger कौन सी है आपकी? n by 2 आपका 20.5 है, ठीक है? तो 20.5 से just कौन सी है? 5 छोटा है, 11 भी लेस देन है, 26 is just greater than, so 26 will be that cumulative frequency. Now determine the corresponding class. In the discrete frequency distribution there were a value. In this portion there will be a class. What kind of class? Related to 26 there will be a class 15 to 20, that will be your class. अब जब भी आपकी क्लास की बात होती है 15 to 20, I think in the earlier video I have already discussed about it, that there is a like this 15 to 20 there is a class like 15 to 20, then this 15 is known as lower limit and this is known as upper limit of a class. Now one more thing, the difference between upper limit minus lower limit, that will be the size of the class. तो साइज इस वाली क्लास के लिए आपका साइज कितना आएगा? साइज विल बी 20 minus 15, that will be 5. तो साइज will be equals to 5. ओके, ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है क्लास के रिगार्डिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। मीडियन आपका ये फॉर्मूला रहेगा L plus n by 2 minus कैपिटल F upon स्मॉल f into h। अब यहाँ पे आपको देखना है कि स्मॉल l क्या है? स्मॉल इज द लोअर लिमिट, तो यहां से आपको मिलेगा l। स्मॉल l कितना मिला आपको? 15। इसके लिए क्या है? लोअर लिमिट क्या है इसमें? ये रही, ठीक है? जो आपकी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है दैट विल बी योर लोअर लिमिट, तो जो राइट साइड में वो आपकी होगी अपर लिमिट। तो l यहाँ पे क्या आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी? 15 to 20, ये आपकी मीडियन क्लास है। दिस इज योर मीडियन क्लास। Okay, now small f is the frequency of the median class. What is the frequency? Just see the frequency, not cumulative frequency.
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 15. सो स्मॉल f वैल्यू कितना रहेगा आपका 15. ओके, मूव टू नेक्स्ट थिंग. कैपिटल F cumulative frequency. Now see the column of the cumulative frequency. In cumulative frequency, what you have to find out? The cumulative frequency of the class preceding class का देखना है अपने को. So preceding class कौन सा होगा? 26 के लिए preceding class कौन सा होता है? 11. ठीक है. So वो वैल्यू आपका क्या रहेगा? 11. तो preceding class कैपिटल F आपका क्या रहेगा? 11. ठीक है. Now move to next thing, that is स्मॉल h. स्मॉल h आपका क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास. साइज अभी मैंने बताया आपको कितना है? 5 है. तो स्मॉल h का वैल्यू कितना है यहां से? 5. तो ये सारी की सारी वैल्यू आ गई. ये मीडियन का आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस फॉर्मूला. ठीक है, याद रखने के लिए आपको रखना ही पड़ेगा. ठीक है. तो यहां से बताओ मीडियन क्या क्या आ जाएगा यहाँ? मीडियन स्मॉल n का वैल्यू क्या है? 15 प्लस n/2 आपका कितना है? 20.5 माइनस कैपिटल F कितना है आपका? 11 अपॉन स्मॉल f कितना है आपका? 15 इंटू स्मॉल h कितना है आपका? 5. जस्ट इसको आप कैलकुलेशन करनी है आपको. ठीक है. तो कितना कितना बन जाएगा? 15 प्लस 20 minus 11, so that will be 9.5 by 15 into 5. so यहां से आप देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स. ठीक है, सॉरी 3 टाइम्स. नाउ इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी ही रहेगी. ठीक है. तो ये अपना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.12 होगा तो 6. ठीक है. सो यहां से आपकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 13 प्लस 3 18.167. ये आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी. और यही आपका क्या हो गया? आंसर होगा. इस तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करनी है? मीडियन फाइंड आउट करनी है व्हेन इट कम्स टू मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. क्या कॉलम बनाना है? क्लास का फ्रीक्वेंसी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n/2, स्मॉल n, स्मॉल f, कैपिटल F, h. ये सब एक जो है आपका फॉर्मूला है, इसको याद रखना ही पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस. ये आपको याद ही करना ही पड़ेगा. एंड इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ए ग्रुप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.